Now the next thing I'm going to talk about is the CI/CD different tools that we have. क्या क्या tools available है, and we are going to compare them. Okay. So then we have to decide कि आपको कौन सा यूज करना है. You can decide it later on. But first you need to understand क्या क्या popular tools available है और किसको किस केस में यूज जनरली किया जाता है. So first tool that I'm going to talk about is GitLab. In case you are using Git तो सब यूज करते ही हैं, करेक्ट. बट Git के साथ if you are using GitHub versus GitLab. So if I am using GitLab, so teams are like already using GitLab. A lot of companies are already using the GitLab. Now the good thing about GitLab is कि it is already providing you a feature of CI and CD pipelines. ये वहां पर आपको CI/CD पाइपलाइंस का फीचर ऑलरेडी दे रहा है. इन ऑर्डर टू सेट अप एनीथिंग इट इज इजी इफ द रैपो इज इन GitLab, क्योंकि ये YAML बेस्ड पाइपलाइंस बनाता है. सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. लाइक इट इज हैविंग अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर एडवांस्ड पाइपलाइंस. इसके पास ऑलरेडी CI/CD का अच्छा खासा सपोर्ट है. सो इट्स वेरी गुड एंड इट इज ऑल्सो फ्री एज ऑफ नाउ. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद पेड प्लान्स भी होते हैं. देन मेन पॉपुलैरिटी GitLab की इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर आप पूरा DevOps इंप्लीमेंट कर सकते हो, प्लस आपका डेवलपमेंट कोड भी आप पुश कर पा रहे हो. सो यू आर एक्चुअली हैंडलिंग टू थिंग्स इन वन प्लेस. Okay, large organizations actually use GitLab for code plus issue plus CI/CD. तो ये आपको तीन चीजें करके देता है. If you use GitLab, you are pushing your code here, maintaining your code here, you can manage your issues here, and then finally you are using it for the CI/CD. तो कंपनीज इसको यूज करती हैं फॉर दीज पर्पस. GitLab, it's a very popular tool when you have to implement the CI/CD pipelines with your application. Next option you have is GitHub Actions. Now in GitHub Actions, इसको जनरली डेवलपर्स काफी प्रेफर करते हैं जो स्पेसिफिक टू डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही रहना चाहते हैं. नाउ दे नीड्स अ डेवलपर होस्टिंग कोड ऑन GitHub. Okay, it's best for developer that are going to host code on the GitHub. All right. Now it is again like in terms of setting up the things, it's really easy. काफी easy है. YAML based workflow बनते हैं इसमें. GitHub Actions का एक option होता है. GitHub पर जाकर you can directly create your actions from there. Okay, and it's highly flexible, I'm telling you. और again इसका भी free tier आता है. And then like you can use it if you're a student or who is going to start a new project or something. You don't have to just understand GitLab or something. किसी दूसरी जगह नहीं जाना है तो you already have a GitHub action, so you can get started with that. Now comes the third thing, that is another popular one known as Jenkins. Now, what exactly Jenkins is? Jenkins is best for the enterprise that needs the full control. Okay, full control on what? CI and CD. Okay, in terms of what I'm talking about, कि इसका थोड़ा सा learning curve थोड़ा सा difficult है if I compare it with the GitLab and GitHub. Okay, लाइक सेटअप करना, प्लगइन्स लगाना, इसमें ट्रिगर्स बिल्ड करना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इफ यू कंपेयर इट विद द GitHub एक्शंस और GitLab. क्योंकि GitLab और GitHub दोनों को ही ऑलरेडी एक कोड पुश कर रहे हैं, साथ में पाइपलाइन भी हैंडल कर रहे हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट जेनकिंस, कोड तो अभी भी गिट पर ही रहेगा, लेकिन गिट के बाद जेनकिंस ट्रिगर होगा जो कि आपके आगे की पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने वाला है. सो नाउ हियर यू आर एक्चुअली यूजिंग टू डिफरेंट टूल्स इनसाइड योर प्रोजेक्ट. अभी तक एक ही टूल था गिट. दैट्स इट. नाउ यू हैव टू डिफरेंट थिंग. गिट अलग है, गिटहब पे जहां पे भी कोड जा रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यू आर यूजिंग गिटलैब और गिटहब. बट फॉर पाइपलाइन इफ यू आर यूजिंग जेनकिंस देन यू आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग अ न्यू टूल. ओके, एंड इट्स रियली वेरी पॉपुलर. फ्री है. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है बाद में आती है आपके पास. एंड इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 2000 plugins. Like it contains plugins for Docker, Kubernetes, GitHub, Slack, SonarQube, whatever you want to integrate. Next comes another popular one is Azure DevOps. Azure DevOps is actually best for the Microsoft ecosystem. If you are full-fledged working with the Microsoft ecosystems, then it is actually the best. Okay, and the learning curve is actually little bit of medium level. बहुत difficult नहीं है, ठीक ठाक है. Okay, and you can integrate it this with easily the GitHub integrations or anything. अलग अलग tools के साथ ये integrate easily हो जाता है. But you have to understand कि मेरे लिए कब काम आएगा. When specifically I'm working on a Microsoft ecosystem like .NET applications पे आप काम कर रहे हो, so it's good for you. Azure applications पे आप काम कर रहे हो, again it is good for you. Okay, then अभी एक चल रहा है जिसका नाम है Travis CI. Now this Travis CI is
something new open source project. It's also really very easy, but it is a little bit difficult if I compare it with the Jenkins or GitLab. थोड़ा limited integrations हैं इसके अंदर if you compare it with the others. Okay, so it's not the first choice of talking about the CI/CD tools. इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं. सर्कल सी आई एक पॉपुलर चल रहा है अभी. सर्कल सी आई इट्स अ क्लाउड बेस्ड SaaS based CI/CD. तो इट इज ऑल्सो सिंपल टू इम्प्लीमेंट. इट इंटीग्रेट्स विद गिटहब, बिटबकेट और एनीथिंग. तो उसको भी काफी आजकल पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसको भी आजकल काफी यूज किया जाता है. So these are different CI/CD tools that we have, and then according to their requirement, according to your requirement, actually you can decide कि मुझे किस टूल की तरफ अभी अप्रोच करना है. So first you understand the comparison. Second, in order to understand the practical differences, कि मैं बात करना शुरू करूं कि क्या क्या मेरे लिए बेस्ट है. No doubt you start with GitHub Actions without thinking any other, like without having any second thought. You can start with it. Okay, you can start with GitHub Actions as your first step because आप already Git करते हो, GitHub भी करते हो generally. Your first pipeline should be created with the GitHub Actions. If you think कि नहीं ठीक है GitHub Actions में उतना flexibility नहीं मिल रहा है, go with GitLab. Okay, so both of them uses simple YAML type of syntax. Okay, they both uses YAML files and integrate easily with their platforms. क्योंकि Git यूज कर रहे हैं internally और ऊपर आके आप GitLab या GitHub कुछ भी यूज करो, so it's best. So it's your first choice. Okay, I'm mentioning here number one. Second choice I'm giving you is the Jenkins. If you want more customizations with plugins, you can make Jenkins do anything, but little bit maintenance is high. So I'll put Jenkins at second place here. Then if you think of some cloud native SaaS based, तो वहां पे आप फिर सोच सकते हो GitHub Actions is already there. Then you can talk about Circle CI as well. Okay, so this is another popular one. Cloud first, like little bit less infrastructure headache you will be having, and then you can go with other options like Jenkins, GitLab CI/CD for self-hosted possible. Okay, but if you want to give control for the enterprise, then you have to think. So this is how you can decide, and this is how my popularity will degrade a little bit. Then if you talk about cost or something, like if you have some Microsoft specific platforms, obviously this is going to be my next choice. So accordingly you can decide कि मेरा किस तरह का project है. अगर मेरे को school, college level, university level कोई project बनाना है, go with GitHub Actions. Okay, क्योंकि already आप code Git पर भी GitHub पर रखते हो. If you are a startup, you can start with a GitLab CI/CD. If you use GitLab repo or you use Circle CI for a fast setup, okay. Then if you're a large enterprise, then you might think of Jenkins because of the flexibility, or you can go with the Azure DevOps if it is a Microsoft stack. If you look for complete open source, then go with GitHub Actions directly. Okay, this is the simple summary here. So GitHub Actions, nothing, just plug and play. CI/CD, little bit of scripting is there. GitLab CI/CD, all-in-one DevOps suite is there. Code, issue, pipeline, everything you do at one single place. Jenkins, it's something not very new. It's a old king and it can do anything, but you have to manage everything there. So that's how you guys can decide that which tool is actually best for you.